का जो फर्स्ट हम लोग का कंसेप्ट या एडिटोरियल जो हम देखने वाले हैं, जिसकी मीनिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ, वो है ट्रीट केयरफुली, जो आज का पहला एडिटोरियल है द हिंदू का. सो लेट्स मूव ऑन टू दोज वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स. आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट वर्ड. फर्स्ट वर्ड जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं ट्रीड. ट्रीड या ट्रेड, जो भी आप बोले. ओके, इट्स मीनिंग इज okay, to proceed along. proceed along यानी कि हिंदी में बोले तो आगे बढ़ने के लिए. ठीक है, अब हम इसका synonyms देखेंगे. synonyms यानी कि words that have similar meanings. synonyms. okay, synonyms देखेंगे. so first synonym will be step, या कह सकते हैं stride और walk. move along ना, आगे बढ़ने के लिए तो हमें वॉक करना ही पड़ेगा. और गाइड, GAIT. ओके, गेट मतलब चलने का चाल जिसे हम कहते हैं, तो उसे गेट कहते हैं. फिर ट्राइब्स, TRIAPSE, ट्राइब्स. ओके, इसे ट्राइब्स ही कहते हैं. चलिए, धीरे धीरे चलना है, कुछ भी कह सकते हैं ट्राइब्स. ओके, now let's move on to its antonyms. Antonyms basically means कि इस वर्ड का opposite meaning क्या हो सकता है. Antonyms. okay, so इसका एंटोनिम क्या हो सकता है. अपलॉड करना, अपलॉडिंग. okay, और यू कैन से कॉशियसली, हम आगे बढ़ेंगे. कॉशियस, आगे बढ़ने से पहले हम कॉशियस रहेंगे. ओके, और स्नीकिंग, देख लेंगे पहले. विल बी स्नीकी बिफोर मूविंग फॉरवर्ड. और स्टेल्दी, स्टेल्दी. और वी कैन से पॉज, पॉज लेके हम आगे बढ़ेंगे. पॉज लेके आगे बढ़ेंगे. ओके, so these are some of the words that has opposite meanings to that of the word treat. Now let's move on to the next word. Next word is fraud. Fraud, what does fraud means? Fraud basically means fraud, something or anything, something that makes one anxious. ठीक है, something that makes one anxious. ANXIOUS. हिंदी में कहे तो चिंतित होना. ओके, now let's move on to its synonyms. Synonyms means words that has similar meaning. Synonyms. So first synonym will be abounding. okay, abounding, ABOUNDING. abounding. abounding का मतलब होता है बहुत बड़ी मात्रा में किसी चीज़ का होना. next word you could say is abundant, ABUNDANT. abundant. ठीक है, abundant. abundant meaning तो सबको बहुत बड़ी मात्रा में. और you could say crammed, CRAMM, wait, sorry, MED, crammed. Crammed also means the same. Crammed means bharpoor. okay, or you could say loaded. okay, now let's move on to its antonyms. That means words that has opposite meanings. Antonyms क्या हो सकता है इसका. okay, so antonyms can be blank or devoid. ठीक है, devoid,
वंचित in Hindi we could say, or empty, or you could say depleted. Depleted means smaller or less than something. Okay, exhausted. Okay, these are some of its antonyms. Now let's move on to the next word. The next word is fragile. So fragile basically means something that is easily damageable. Easily damageable, or that can be damaged easily, is known as fragile. Fragile मतलब से ग्लास इज़ ए फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ को जिसको हम आसानी से क्षति पहुंचा सकते हैं तो उसको हम फ्रेजाइल कहते हैं. ठीक है. द नेक्स्ट वर्ड विच कम्स टू माइंड इज सिनोनिम्स. सिनोनिम्स मतलब वर्ड्स दैट हैव सिमिलर मीनिंग्स. तो सिनोनिम कहे तो फर्स्ट वी कैन से इज इनसब्सटेंशियल. INSUBSTANTIAL, insubstantial. सो insubstantial मतलब कोई भी कमज़ोर चीज़. ठीक है. और यू कुड से एक्शल. अंडे का बाहरी परत. और यू कैन से वीक. ओके. और यू कैन से फ्रेल. FRAIL, फ्रेल. फ्रेल मतलब नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ और ब्रेकेबल. ठीक है. जिसको हम इजीली ब्रेक कर सकें. नाउ लेट्स मूव ऑन टू इट्स antonyms. Antonyms means words that has opposite meanings, is known as antonyms. Okay. So first thing will be durable, right? Durable, जिसकी durability हो. Durable. Or strong, or you could say robust. ROBUST, robust. Robust मतलब तगड़ा in Hindi. Okay. Or tough, or you could say unbreakable. ठीक है. So these are some of the words that has opposite meanings to that of fragile. Now let's move on to the next word. The next word is resurgent. Resurgent मतलब basically anything that can rise again, something that can rise again, like you can say price. Okay. Price. Okay. कोई भी वस्तु, प्राइस एग्जाम्पल में दे रहा हूँ. प्राइस समथिंग दैट कैन राइज अगेन. ओके. कोई भी वस्तु जो फिर से बढ़ सकता है, जैसे कि कीमत, उसी रिलेटेड वर्ड में हम रिसर्जेंट का यूज़ करते हैं. ठीक है. अब हम बात करेंगे इसका सिनोनिम के बारे में. सिनोनिम्स बेसिकली मीन्स वर्ड्स दैट हैव सिमिलर मीनिंग. ओके. सो इसका सिनोनिम हो सकता है कम बैक करना. और यू कैन से रिकवरी. और यू कैन से rebound, or you can say renewal, or you can say renaissance, RENAISSANCE. renaissance मतलब रिवाइवल या पुनर्जीवित. ठीक है. Now let's talk about its antonyms. Antonyms means words that has opposite meanings. Antonyms के बारे में बात करते हैं, मतलब इस वर्ड्स का opposite meaning. So close down, rise नहीं होगा तो इसका opposite क्या होगा? close down. ठीक है.
और हम लिख सकते हैं latent, latent. Latent basically means inactive, or you can say inoperative. Or you can say dormant. Dormant मतलब inactive. ठीक है. So these are some of the words that has opposite meanings to that of resurgent. अब हम बात करेंगे दूसरे एक वर्ड के बारे में. The next word that comes to my mind is cumulative. मतलब कोई भी चीज़, anything that grows through accumulation of addition is known as cumulative. Addition करके जो grow करता है, something that grows additionally, it grows, okay, grows through addition is known as cumulative. Yeah, in Hindi there is a word called sanchayman. Okay, now cumulatives we'll look about its antonyms. अब हम इसके antonyms के बारे में, sorry, synonyms के बारे में पहले बात कर लेते हैं. My mistake. Synonyms, right? Synonyms क्या क्या होगा? Words that has शब्द जिसका similar meaning रहता है cumulative के साथ. So progressive एक word हो सकता है, right? Progressive. Or you can say increasing. ठीक है, increasing. Or you could say augmenting, augmenting. Augmenting का बेसिकली मीनिंग होता है बढ़ाने के लिए augmenting. Okay, or you can say aggregate. Okay, अब हम बात करेंगे इसके antonyms के बारे में. Okay, now let's talk about its antonyms. Antonyms इसका क्या क्या हो सकता है, right? So antonyms will be decreasing, or you could say diminishing. घटना, scatter कि बिखर जाना, or you could say disperse, or you could say dissipate, 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 pate. So to disappear slowly, आहिस्ता आहिस्ता कोई चीज़ अगर गायब हो जाए तो उसको हम dissipate कहते हैं. ठीक है. Now let's move on to the next word. The next word that comes is roiled, roiled. Okay, something that moves in turbulence. मतलब कोई भी चीज़ जो turbulence में move करती है, moving in something that is moving in turbulence. Okay, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे roiled. So turbulence मतलब मैं समझा देता हूँ. turbulence जब भी समंदर के ऊपर से कोई भी जहाज़, आई मीन टू से फ्लाइट जब ऊपर से जाती है तो एक झटका या शेक अप फील होता है ना, तो उसी को हम कहते हैं turbulence. Okay, whenever a flight moves through the seas, through sea, sometimes you can feel something shaken up. Okay, so you feel like certain shakiness, so it is basically termed as turbulence. Okay, something that's move in turbulence is known as roiled. So now अभी हम बात करेंगे. Now let's talk about its synonyms, right? Synonyms. Roiled. Synonyms. So its synonyms will be, you can say first word is rile, or you could say annoy, or you could say vex, vex. Vex मतलब to feel worried. Okay, or displease, or you could say churn, churn. चर्न वर्ड को आप चर्नोबिल पावर प्लांट से आप कनेक्ट कर सकते हैं. चर्न तो वहाँ से याद रखना इजी हो जाएगा.
churn basically means to move violently. Okay, किसी भी चीज़ अगर violence it moves, it is known as churn. Now let's talk about its antonyms. Mean, which basically means words that have opposite meaning. Antonym मतलब क्या होगा? aid होगा, ठीक है. displease है तो please होगा. Or you could say soothe, SOOTHE, soothe मतलब शांत करना. और delight. Okay, these are some of the words that has opposite meaning as far as I know. Okay, you can search other things. Okay, the next word that comes to my mind is tenuous. Tenuous, TENUOUS. tenuous basically means एकदम simple, uncertain. uncertain मतलब आपको सबको पता है, uncertain मतलब अनिश्चित, ठीक है, तो उसको हम tenuous कहेंगे. Now let's talk about its synonyms. If we talk about its synonym, first thing that comes to my mind is fragile, okay, or shaky, ठीक है, or you can say weak, or you could say nebulous. Okay, NEBULOUS. nebulous basically means something that is not clear. Okay, that is termed as nebulous. nebulous मतलब कोई भी चीज़ जो clear नहीं है उसे हम nebulous ही कहते हैं, ठीक है. Now let's talk about its antonyms. antonyms क्या हो सकता है? words that has opposite meanings. क्या क्या शब्द बैठ सकता है? सो पहला वर्ड आप कर सकते हैं, वीक है तो हम स्ट्रॉन्ग लिख सकते हैं, राइट. स्ट्रॉन्ग. और यू कुड से सब्सटेंशियल. सब्सटेंशियल इसका सिनोनिम इनसब्सटेंशियल भी हो सकता है, ठीक है, बता देता हूँ आपको. और यू कुड से हैवी. और यू कुड से वीक है तो फिर हेल्दी होगा, ऑपोजिट, ठीक है. So these are some of the words that has opposite meanings to that of the word tenuous. Now let's move on to the second topic in the Hindu, that is हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है गॉन गर्ल्स ऑन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन. ये द हिंदू का एडिटोरियल है, ठीक है. सो इसका फर्स्ट वर्ड जो मुझे लगता है थोड़ा टफ होगा, दैट इज़ प्रोवर्बियल. PROVERBIAL. प्रोवर्बियल, ठीक है. प्रोवर्बियल का बेसिकली मीनिंग होता है समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू. ओके, प्रोवर्बियल समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू, वी कैन से इज प्रोवर्बियल. किसी चीज़ के साथ रिलेट करता है तो उसको हम प्रोवर्बियल कहते हैं, ठीक है. इवन आई एम स्टैमरिंग टुडे. ओके, रिलेटेड टू समथिंग, related to anything, okay, is known as proverbial. Now let's talk about its synonyms. इसका synonyms क्या क्या हो सकता है? That is something that happens frequently. frequent, okay, frequent होता है. और recognizable है ये चीज़, recognizable, okay. और you could say unceremonious, UNCEREMONIOUS, unceremonious. basically anything, कोई भी चीज़ which lacks in respect is known as unceremonious. तो disrespectful हो उसे हम unceremonious कहते हैं. और you could say mundane, 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 okay, DANE, mundane. or you could say notorious, okay. Now let's talk about its antonyms, ठीक है. इसके antonyms के बारे में हम बात करेंगे. words that has opposite meaning. Then antonyms will be dubious, 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 or
suspect, or you could say suspected. Okay, suspected or questionable. So these are some of the words that has opposite meaning to that of um proverbial. So dubious basically means okay, कुछ भी चीज़ अगर अनश्योर हो तो हम उसे dubious कहते हैं. ठीक है. Now let's move on to the next word. The next word that comes to my mind is slackening. So slackening basically means something that moves slowly, or something that is moving slowly is known as slackening. Okay, now let's talk about its synonyms. Okay, synonyms will be, what are its synonyms? Words that has similar meanings. Okay, decelerate, decelerate हो सकता है, or you could say relaxed, or you could say loosen. Okay, or you could say moderate. So these are some of its synonyms. ठीक है. Now let's talk about its antonyms. Antonyms क्या क्या हो सकता है? So first will be tighten up, tighten, or you could say speed up, speed up, or you could say quicken, 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 or you could say enlarge, Enlarge, or you could say intensify, Intensify. So these are some of the words that has opposite meanings to that of the word slackening. So with this I would like to end my segment for the daily editorial of various newspapers. Today I have done on the Hindu only because I have some other plans. So thank you very much for watching and I hope it will be helpful for you. And I'm gonna repeat again कि आपको editorial खुद ही पढ़ना है because it will be helpful for you. The more you read, the more understanding you can get. All I'm doing here is कि मैं आपको बस वर्ड्स का मीनिंग समझा रहा हूँ, so that when you read it by yourself you will understand by yourself only कि इस editorial में बताना क्या चाह रहा है. So thank you very much and I hope you like it, and if you like it please like, share and subscribe to my channel. Thank you very much.